What is that here? Bernoulli's equation is what? Already I have derived this. Gravitational head plus velocity head plus pressure head of an ideal liquid is constant. यहीं तक पढ़ाई हुआ था शायद. अरे यहीं तक हुआ था कि नहीं? हेलो, अरे यहीं तक हुआ था. ये डेरिवेशन हो गया था. Yes, sir. Next write down application of Bernoulli's equation. Write down what is its application. लिखो application of Bernoulli's equation. Application of Bernoulli's equation. If I am taking a non-uniform area of cross section, variable area I am taking. In another page you have to record. Let's see. If I am taking non-uniform area, then what will happen? Suppose I am taking variable area of cross section of a tube, like this. This is what? Large area of cross section. This is what? Less area of cross section. And what? Suppose this is at a height h from ground. This is the ground here. This is the ground here. And what? This side height is always measured from center to center. Height is always measured from what? Center to center. This is the what height from center to center. Height is measured from center to center. Let h is the height. H is the height from the ground. Understand this. And the liquid is what? Flowing in a streamline motion like this. Just like your shape of the tube, it will flow. Shape of the tube, it will flow, and it will flowing in a streamline motion. Understand this? Let A1 is the area of cross section here. This is what A1 is the area of cross section. This is what A2 is the area of cross section. Here velocity of the liquid is V1. Here the velocity of liquid is V2. Now my question is, whose velocity is more, V1 or V2? Which is more, V1 or V2? Which Sir, velocity is wait. more? V2. Why? Why V2 is Sir, more? sir, small area. Small area of cross section. V2 is more. Equation of continuity. Now, write down, draw the figure. Draw the figure. Apply. So now it's important. We have to apply Bernoulli's equation to both the point. This is what point A and this is what point B. Because Bernoulli's equation is according to the law of conservation of what? अरे क्या है? Bernoulli's equation is according to the law of conservation of energy. Now write down. According to Bernoulli's equation, total energy at A is equal to total energy at B. According to Bernoulli's equation, total energy at A is equal to total energy at B. Therefore, what will happen? Therefore, GH, अरे A में हाइट कितना है बोलो? A में हाइट मेरा कितना है? A में हाइट h है, B में भी हाइट h है. तो राइट डाउन GH plus half V1 square plus P1 by rho is equal GH plus half V2 square plus P2 by rho. Understand this? GH getting cancels out. So I will get half V1 square plus P1 by rho is equal half V2 square plus P2 by rho. Or we are getting here half V square plus P by rho is your constant. Is your constant. What do you mean by this? Half V square plus P by rho is constant. What do you mean by this? What do you mean by this? I can write half V square is equal constant minus P by rho. So what is the meaning of this? Constant minus P by rho. What do you mean by this? So velocity and pressure are connected by a negative sign. Means what? जहाँ पे लिक्विड का वेलोसिटी ज़्यादा आएगा, जहाँ पे लिक्विड का वेलोसिटी ज़्यादा आएगा वहाँ पे प्रेशर कम आएगा एंड वाइस वर्सा. So half V square plus P by rho is your constant. What do you mean by this? V square and what? P are connected by the negative side. Means what? On increasing velocity of the liquid, there the pressure is what? Less and vice versa. Likho. This is what? Constant. Constant. Half V square is equal constant minus P by rho. Write down. From the above equation, it is clear that from the above equation, it is clear that
Large is the velocity of liquid, less is the pressure. Large is the velocity of liquid, less is the pressure. Large is the velocity of liquid, less is the pressure. Less is the pressure. Understand this? Less is the pressure. ये समझ में है? Now, example क्या होगा देखो. Example, first example. In a stormy wind, roofs are blown away. अरे विंड में फाइलो नोड आया तो क्या किया? छत को उड़ा दिया. क्यों छत को उड़ाया? अरे छत को क्यों उड़ाया? देखो, एयर कैन बी ट्रीटेड एज फ्लूइड. एयर कैन बी treated as fluid. So when air is blown strongly above the roof, what will happen there? The pressure here decreases. Above the roof, the pressure decreases. Why? According to Bernoulli's equation, what? If velocity of the liquid is increasing, the pressure will be less there. पहले जब एयर नहीं हुआ था, प्रेशर दोनों तरफ सेम था, नीचे एंड ऊपर दोनों सेम था. when the air is blown above the roof, the pressure there is decreasing. as pressure is decreasing and नीचे का जो प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए roofs are blown away. समझ में आ रहा है? अरे समझ में आया? Why सर roofs और are एक बार blown away? थोड़ा सा, Roofs are सर blown थोड़ा away. सा और Why? एक बार. Yes, roofs are blown away. Why? Above the roof, the air velocity is more, very high. When velocity of air is very high, pressure decreases here. As pressure decreases here, automatically what will happen? ये नीचे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि पहले सेम प्रेशर था, अभी ऊपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, मतलब what? रूफ ऊपर उठेगा एंड एयर के साथ ब्लो हो जाएगा. समझ में? हेलो, अरे समझ में आया? प्रतीक, तुम्हारा क्वेश्चन था ना? ये सर, ये सर. समझ में? लिखो फर्स्ट एग्जांपल. roofs are blown away in a stormy wind. First example, roofs are blown away in stormy wind. Roofs are blown away in stormy wind. Roofs are blown away in stormy wind. Next, number two. Number two. सर Number नंबर two. वन और एक बार बोल. Roofs are blown away. Roofs are blown away in a stormy wind. Roofs are blown away in stormy wind. हो गया? Roofs are blown away in stormy wind. Is that clear? Next, number two. Number two क्या होगा? अगर दो बोट और शिप ऐसे अगर पैरेलल जाएंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा. दोनों ऐसे कोलाइड करेंगे. Why? When the ship is moving, the water in between them also moving in opposite direction. शिप का स्पीड जितना होगा, वाटर का स्पीड भी उतना होगा. दोनों शिप के बीच में वाटर का स्पीड भी उतना होगा. As the speed of water increases here, तो pressure here is less than the outside pressure. अरे यहीं पे speed of water will be rapid ना, therefore here pressure decreases. Then this and this point, therefore instead of the ship is moving straight, they will what? Due to less pressure, they will what? Move in a curve like manner and they will collide. Understand this? Therefore it is always dangerous that dangerous to what? Row the boat or ship what? Parallel to each other. Very dangerous. अरे समझ में है? Therefore कभी पैरेलल नहीं जाता है शिप, क्योंकि ये वाटर का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा. यहीं पे वाटर का वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगा, यहीं पे प्रेशर कम होगा. यहीं पे ऑलरेडी प्रेशर व्हाट? इसका ये दिस प्रेशर विल बी ग्रेटर देन दिस प्रेशर. therefore instead of moving straight, the ship will move in a parabolic manner. ये भी ऐसे जाएगा लो प्रेशर की तरफ, तो कोलाइड होगा. समझ में है? देखो सेकंड एग्जांपल. two ships cannot move parallel. Two ships cannot move parallel. थर्ड एग्जाम्पल क्या होगा? इट इज ऑलवेज डेंजरस टू स्टैंड नियर बाय फास्ट मूविंग ट्रेन. फास्ट मूविंग ट्रेन के साइड में अगर खड़े हो गए तो प्रॉब्लम है. क्यों? फास्ट मूविंग ट्रेन जब जा रहा है, एयर बिटवीन यू एंड ट्रेन ऑल्सो मूविंग रैपिडली इस डायरेक्शन में. एज what? Air is moving rapidly. Here the pressure is what? Less than backside of our body. Clear? Therefore we'll fall down towards the train. हम खड़े हो पा रहे. क्यों? इस साइड प्रेशर जितना है, इस साइड प्रेशर उतना है. अगर ये प्रेशर
लो हो जाए तो हम गिरेंगे जिस तरफ लो प्रेशर की तरफ, इसलिए ट्रेन की तरफ ही हम लोग गिरेंगे। समझ में है? लिखो थर्ड वन, इट इज ऑलवेज डेंजरस टू स्टैंड नियर ए फास्ट मूविंग ट्रेन। It is always dangerous to stand near a fast moving train. Always dangerous to stand near a fast moving train. Is it clear? Next, number four. Number four. Bunsen burner. नाम सुना है बुनसन बर्नर का? हेलो, अरे बुनसन बर्नर नाम सुना है? अरे नाम सुना है कि नहीं? हेलो रुबेन, अरे नाम सुना है? No, sir. नहीं सुना? रोहन सुना है बुनसन बर्नर? हेलो, सर वो केमिस्ट्री में यूज होता है। केमिस्ट्री में यूज होता है। यस। अरे रोहन क्या है? उदित सुना है? यस। अरे रोहन सुना है बुनसन बर्नर? रोहन No, sir. नहीं सुना? आशीष, अरे नहीं सुना? अरे क्या है? केमिस्ट्री लैब में है, केमिस्ट्री लैब में कभी नहीं गया? अच्छा, अभी स्कूल ओपन होगा तो जाओगे। बुनसन बर्नर नहीं तो घर का जो स्टोव, जो गैस स्टोव यूज करे, गैस चूल्हा, उसमें रेगुलेटर है। रेगुलेटर के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में अंदर वाला देखो कैसे होगा, रेगुलेटर के ठीक अपोजिट में। तो क्या है? सेम एज बुनसन बर्नर मैकेनिज्म। क्या है? बुनसन बर्नर में एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, यहीं पे होल होता है, दोनों साइड होल होता है, एंड इसमें बर्नर होता है, ये बर्नर है, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ जेट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे जेट होता है, एंड ये ट्यूब में गैस जाता है, ये ट्यूब में गैस जाता है। when ये jet like manner है, jet मतलब equation of continuity, as the pin hole is there, definitely the speed of gas is very rapid here, the speed of gas is very rapid here, speed is very large, very high here, therefore here the pressure is less than outside pressure, ये atmospheric pressure है। तो when the speed of the gas is very high through this nozzle, what will happen? The pressure here, the pressure is what? Less than here. Therefore, air will rush into the hole and mix up the gas so that you will get well oxygenated flame. Air will rush through this hole and mix up with the gas easily so that you will get oxygenated flame and you will get what? High calorie. If you close this one, you will get what? Deoxygenated flame whose calorie value is very less. सिमिलरली घर में जो है गैस यूज कर रहे हैं, रेगुलेटर से, रेगुलेटर के पीछ एग्जैक्टली पीछे देखो तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होगा, फिर ये ऐसे रन क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा गैप रह के यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जेट लाइक स्ट्रक्चर होगा, ऐसे ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर होगा जिसमें गैस निकलता है, एंड ये बर्नर के तरफ दिया गया, ये बर्नर है। तो ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर को जब ऑन करोगे गैस इसमें व्हाट? रस क्विकली, यहाँ पे गैप होता है, बहुत ज़्यादा गैप होता है, यू कैन सी दैट गैप, एंड व्हाट? gas is rushing quickly here, and the speed of gas is more here, therefore pressure is less here, therefore air can mix up with the gas, will get what? Oxygenated flame here. That is what Bunsen burner, that works in Bernoulli's equation। हर एक चीज में बर्नौलीज इक्वेशन अभी आएगा, समझ में है? लिखो बुनसन बर्नर वर्क्स। समझ में है बुनसन बर्नर क्या है आशीष? अरे बुनसन बर्नर क्या समझ में है कि नहीं? अरे समझ में है? सभी में बुनसन बर्नर का कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम गैस स्टोव टू व्हाट? केरोसिन स्टोव, एवरीवेयर यू विल गेट दिस बुनसन बर्नर कॉन्सेप्ट। क्लियर? एंड दैट इज व्हाट? बर्नौलीज इक्वेशन कॉन्सेप्ट। लिखो बुनसन बर्नर वर्क्स अकॉर्डिंग टू Bernoulli's equation। Bunsen burner works according to Bernoulli's equation। Bernoulli's equation। तो माय क्वेश्चन नाउ हियर इज व्हाट? ये क्लोज चैम्बर लिया मैंने, पूरा क्लोज चैम्बर लिया, वाह, इसमें दो पेंडुलम को हैंग करूंगा, एंड बीच में क्या होगा? यहाँ पे जेट लाइक एयर पास करूंगा, जेट लाइक एयर। तो व्हाट विल हैपन टू ए एंड बी पेंडुलम? व्हाट विल हैपन? ये एयर में ब्लो कर रहा हूँ, ये जेट में एयर इज ब्लोन। व्हाट विल हैपन अबाउट ए एंड बी? दे विल रिमेन देयर एंड दे विल कम क्लोजर और दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। क्या होगा बोलो? Sir, come closer. कम क्लोजर। व्हाई?
when the jet air is there, the pressure here is less than pressure here. Therefore, they will come closer. According to Bernoulli's equation, they will come closer. Yes, they will come closer because pressure is decreasing here. Therefore, they will come closer. समझ में है? ये था Bernoulli's equation. Next, atomizer. Atomizer works according to Bernoulli's equation. Atomizer क्या है? देखते हैं. नंबर 5, atomizer. अरे एटोमाइजर क्या है? डीओ लगाते हैं ना. हेलो, अरे डीओ लगाते हो या सेंट? सेंट में Yes, क्या sir. क्या है मैकेनिज्म बोलो. अरे सेंट में क्या मैकेनिज्म है? एक बड़ा सा बोतल होता है. वाह, ऐसे कुछ होता है बोतल. मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ देखो. और क्या होता है? अरे यहीं तक डीओ होता है या फिर सेंट होता है. वाह, परफ्यूम. ओके, इसमें क्या डिप किया जाता है बोलो. अरे इसके अंदर क्या है? क्या डिप किया जाता है? अरे इसके अंदर क्या है बोलो. अरे डीओ लगाते हो, पता नहीं क्या है? अरे इसमें क्या है? जल्दी बोलो. है? इसमें क्या है? एक कैपिलरी ट्यूब डीप किया गया है. अरे देखा नहीं? इसमें क्या डीप किया गया है? हेलो, कैपिलरी ट्यूब डीप किया गया है. अरे देखा है कभी? आज देखो, इसके ऊपर कैप है. ऐसे ऐसे कैप है, इसको बोलते हैं एटोमाइजर. ये कैप है, यहाँ पे एक होल होता है. दिस इज व्हाट एटोमाइजर. अंडरस्टैंड दिस. तो इसका कॉन्सेप्ट, दिस इज नोन एज एटोमाइजर. दिस इज व्हाट एटोमाइजर. इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? when you press this atomizer, when you press this atomizer, air is blown over the mouth of this capillary tube. Air is blown rapidly, high speed में air को blow किया जाता है. कैपिलरी ट्यूब का कैरेक्टर क्या है? द लिक्विड ऑलवेज राइजेस इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब. ये एक इनसफिशिएंट हाइट ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, मतलब जो सेंट है पूरा ये नेक तक है प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये कैपिलरी ट्यूब इनसफिशिएंट हाइट है. as the capillary tube is having insufficient height, therefore liquid will rise up to the mouth of the capillary tube. यहीं पे आके रुक जाएंगे क्योंकि आगे तो ट्यूब नहीं है. यहीं पे atmospheric pressure is same as what? Inside pressure. Now if you just press this atomizer, air is blown over the surface of the what? Capillary tube. Means air will blown here, air will blown here, rapidly blown here. Means what will happen? The pressure here decreases. अगर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो फिर लिक्विड ऊपर राइज करेगा, है कि नहीं? एंड ये एयर के साथ आ जाएगा, निकलेगा. जब एयर के साथ निकलेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू ड्रॉपलेट्स. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटोमाइजर. जब सेंट स्प्रेयर डीओ में है, स्प्रेयर में जिसे भी स्प्रे कर रहे हैं, एटोमाइजर कॉन्सेप्ट, वहाँ पे बर्नौलीस इक्वेशन डाला जाता है. बर्नौलीस इक्वेशन से ये ड्रॉपलेट निकलता है. समझ में एटोमाइजर क्या है? एटोमाइजर को प्रेस करो so that you can what? Blow air over this capillary tube, and when air is blowing over the capillary tube, the pressure here is decreasing. Therefore, the liquid again further rising and it is coming out of the tube. Understand this? किसका डाउट है ये? Any doubt? कुछ पूछना है? अरे कुछ पूछना है? पूछना नहीं है? लिखो, write down. Atomizer works according to Bernoulli's equation. Atomizer works according to Bernoulli's equation. Bernoulli's equation. Number 6. Number 6 is what? That is another important. So, what? Aerofoil or dynamic lift is due to what? Due to what is that? Bernoulli's equation. और एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन रह गया, दैट इज मैग्नस इफेक्ट, जो क्रिकेट में बहुत यूज किया जाता है. मैग्नस इफेक्ट लिखो. मैग्नस इफेक्ट क्या है? मैग्नस इफेक्ट क्रिकेट में बहुत यूज उसका है. बॉलर यूज करता है, पेसर एंड स्पिनर. क्रिकेट बॉल कैसा है देखने में? क्रिकेट बॉल, अरे क्या है? ये एक सीम बोलते हैं, हाथ में सिलाई करते हैं इसको. ये हाथ में ही क्रिकेट बॉल सिलाई करते हैं, किसी भी मशीनरी में सिलाई नहीं होता. ये क्रिकेट बॉल हाथ में सिलाई करते हैं. ये जो सीम देख रहे हो, थोड़ा बॉल से ऊपर उठ के रहता है थोड़ा. कभी देखा है क्रिकेट बॉल?
अरे जो रियल क्रिकेट बॉल देखे है ना, जो सीम में बॉल से थोड़ा ऊपर है, थोड़ा, अंडरस्टैंड दिस। तो जब नया नया बॉल आता है, एयर स्विंग बोलते हैं, इन स्विंग एंड आउट स्विंग। नाम सुना है कभी क्रिकेट क्रिकेट में, इन स्विंग आउट स्विंग? Yes, sir. अरे क्रिकेट कौन कौन नहीं खेल रहा है बोलो? अरे क्रिकेट किसको पता नहीं है? सभी तो मैक्सिमम को लोगों को तो पता होगा। किसको क्रिकेट पता नहीं, क्रिकेट के बारे में आइडिया अभी आएगा? वाह, अरे सभी क्रिकेट खेले हो गर्ल्स, क्रिकेट के बारे में पता है ना? तो व्हाट इज दैट हियर, ये सीम है, इन स्विंग एंड आउट स्विंग, बहुत खतरनाक बॉलिंग है। ये इन स्विंग आउट स्विंग कब होता है? थोड़ा सा अगर विंड और ब्रीज है अक्रॉस द फील्ड, अगर ये मेरा पिच है, ये मेरा पिच है, ये यहाँ पे बॉलर है, यहाँ पे बॉलिंग कर रहा है, यहाँ पे बैट्समैन है, यहाँ पे बैट्समैन है, ये बॉलर है, ये बैट्समैन है, ये ब्रीज इज ब्लोइंग अक्रॉस द फील्ड, ऐसे ऐसे होगा, या फिर ऐसे ब्लो क्या होगा, क्या होगा? तो ये बहुत खतरनाक तरीके से इन स्विंग आउट स्विंग होगा। कैसे होगा देखो, तो बॉलर जब बॉलिंग कर रहा है, अरे पेसर कैसे बॉल को पकड़ रहा है? पेसर ऐसे ऐसे अंगूठे में ऐसे पकड़ रहा है बॉलर, एंड स्पिनर कैसे पकड़ता है? अक्रॉस द सीम पकड़ता है, ऐसे। अरे पता है कि नहीं, पेसर बॉल बॉल को कैसे पकड़ता है? पेसर बॉल को ऐसे पकड़ता है, एंड स्पिनर बॉल को कैसे पकड़ता है? स्पिनर बॉल को ऐसे पकड़ता है। समझ में आया कि नहीं? हेलो, अरे पेसर जो है बॉल को ऐसे पकड़ता है, ऐसे, ये उसका अंगूठा है तो ऐसे पकड़ता है। स्पिनर क्या, अक्रॉस द सीम पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है, हुआ कि नहीं? तो पेसर के लिए क्या होगा देखो, पेसर क्या हो रहा है, बॉल को ऐसे पकड़ा एंड बॉल को छोड़ दिया, एंड व्हेन विंड इज ब्लोइंग अक्रॉस द पिच, नाउ व्हाट, इट कोलाइड विद द सीम, सीम के साथ कोलाइड होगा जोर से, क्योंकि सीम थोड़ा बॉल से उठ के है ना। जब कोलाइड होगा, देर इज ए स्पिनिंग ऑफ बॉल अकर, जैसे से व्हाट, पेसर का बॉलर से हाथ से बॉल छूटेगा तो क्विकली कोलाइड, द विंड कोलाइड विद द सीम, and there is a spinning rapidly increases. When the spinning is increasing, the velocity also increasing. When the velocity of the wind here is very much high, then I can say pressure here is less than pressure here. Wind ऐसे blow हो रहा है rapidly, ये spin भी हो रहा है। जब spin हो रहा है, यहीं पे velocity बढ़ेगा। अरे इस साइड velocity जितना है इससे ज़्यादा बढ़ेगा इस साइड में। अगर velocity ज़्यादा हो गया तो यहीं पे प्रेशर कम है, एंड यहीं पे प्रेशर ज़्यादा है। कहाँ पे प्रेशर कम होगा? यहीं पे प्रेशर कम होगा, यहीं पे प्रेशर ज़्यादा होगा। बॉलर स्ट्रेट ही बॉलिंग कर रहा है, अरे समझ में? ड्यू टू विंड व्हाट विल हैपन, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बॉल सीधा ना जाके, अगर विंड ऐसे ब्लो कर रहा है तो ऐसे बॉल जाएगा, थोड़ा घूमेगा एयर में, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। बैट्समैन क्या कर रहा है, इधर खड़ा है, वो सोच रहा है बॉल सीधा ही आएगा, बट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ऐसे घूम रहा है वह, तो उसको डिफेंस करने के लिए जाएगा, तो इधर एलबी होगा, नहीं तो बोल्ड होगा। दिस इज इन स्विंग, समझ में? अगर एयर ऐसे ब्लो करेगा तो ये ऐसे जाएगा, आउट स्विंग होगा। वो छेड़खानी करते हैं बैट्समैन, क्योंकि वो माइंड मेकअप करते हैं बॉल सीधा ही आएगा, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आउट स्विंग हो रहा है, तो बॉल को मारने के लिए कोशिश करते हैं, तो वाइड बॉल को, तो डेफिनेटली वो कैच कैच होते हैं, कट आउट होते हैं। समझ में है कि नहीं? इज इट क्लियर नॉट? दिस इज द मैग्नस इफेक्ट। अरे समझ में है? किसका डाउट है मैग्नस इफेक्ट के ऊपर? अरे किसका डाउट है? इसका और एक अच्छी तरीके से भी तुम टेस्ट कर पाओगे घर में। देखो, ये जेट में वाटर लिया, फाउंटेन की तरह वाटर गिरा, एंड ये ऐसे वाटर गिरता है फाउंटेन की तरफ, ऐसे ऐसे वाटर गिरता है। इफ आई जस्ट पुट ए प्लास्टिक बॉल हियर, एक प्लास्टिक बॉल को यहीं पे रख दिया मैंने, ये प्लास्टिक बॉल कभी नीचे नहीं आएगा, वो ऐसे नीचे कभी बाहर नहीं आएगा, वो व्हाट, नीचे ऊपर रहता जाएगा। अगर ये थोड़ा सा इधर भी आने के लिए कोशिश करेगा, स्पीड ऑफ वाटर हियर इज मोर, स्पीड ऑफ वाटर हियर इज मोर, हियर द स्पीड ऑफ वाटर इज मोर, देयरफॉर प्रेशर इज लेस, हियर प्रेशर इज मोर, देयरफॉर ये फिर उसको अंदर धकेलेगा, इसलिए कभी बाहर नहीं आ पाएगा। दैट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नस इफेक्ट। क्लियर हुआ मैग्नस इफेक्ट के ऊपर? हेलो, तो जो बॉलर को सिखाया जाता है बर्नौली इक्वेशन, हाउ टू बॉल, ऐसे नहीं बॉल हाथ में लिया फेंका, दैट इज नॉट क्रिकेट। इसमें टेक्निक यही है। अरे समझ में है सभी को? हेलो, अरे समझ में है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. देखो, मैग्नस इफेक्ट इज बेस्ड ऑन, राइट डाउन, मैग्नस इफेक्ट
Magnus effect is based on Bernoulli's equation. Magnus effect is based on Bernoulli's equation. Next, lifting of aeroplane is based on Bernoulli's equation. Lifting of aeroplane. Lifting of aeroplane is based on Bernoulli's equation. How? Write down. और aerofoils और डायनामिक लिफ्ट, इसको भी बोलते हैं डायनामिक लिफ्ट. लिफ्टिंग, write down. Lifting of aeroplane or dynamic lift is based on Bernoulli's equation. Lifting of aeroplane or dynamic lift is based on Bernoulli's equation. How? Is based on Bernoulli's equation. देखो, एरोप्लेन का विंग इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? स्ट्रीमलाइन शेप. अगर एरोप्लेन या बार्ड का भी फेदर देखोगे, फेदर जो बार्ड का फेदर ऐसे होता है. अरे बार्ड का फेदर जो है नीचे ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है, ऐसे होता है. देखा है कभी बार्ड का फेदर? अरे बार्ड भी उड़ते हैं ना, वो भी बर्नौली इक्वेशन ही उड़ते हैं ऊपर. कभी देखा है बार्ड का फेदर? एरोप्लेन का विंग ही ऐसा होता है, दोनों तरफ विंग नीचे पूरा स्ट्रेट होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ऊपर जो है ऑलमोस्ट स्लोप होता है, ऐसा स्लोप होता है. दिस इज द विंग ऑफ द एरोप्लेन. तो इसका एडवांटेज क्या है? व्हेन एरोप्लेन इज व्हाट? जस्ट बिफोर फ्लाइंग इट इज रनिंग वेरी फास्ट ऑन इट्स रनवे. देखा है एरोप्लेन कैसे ऊपर उठता है? रनवे में पहले रन करता है या फिर हेलीकॉप्टर की तरह उड़ता है ऊपर? अरे एरोप्लेन कैसे उड़ता है? रनवे में रनिंग करता है. तो ये हेलीकॉप्टर की तरह क्यों नहीं उठ पा रहा है? कोई बता पाएगा? अरे उसको रनवे में क्यों रन करना पड़ता है? हेलीकॉप्टर जैसे उठ रहा है. हेलीकॉप्टर किस प्रिंसिपल में ऊपर उठ रहा है बोलो? अरे हेलीकॉप्टर किस प्रिंसिपल में ऊपर उठ रहा है? बॉयंसी. यूजिंग प्रिंसिपल व्हाट? बॉयंसी कॉन्सेप्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल. रोटर्स, यस रोटर्स. व्हाट? उसमें थ्रस्ट दे रहा है रोटर. किसको? एयर को थ्रस्ट दे रहा है तो ऊपर उठ पा रहा है. उसका एफिशिएंसी कम है, बहुत ज़्यादा थ्रस्ट देने से ऊपर उठेगा. वो भी 5, 6 या 10 लोग को ले सकता है. हुआ कि नहीं? नहीं तो एरोप्लेन क्या है, इसमें बहुत सारे बैठ सकते हैं. वाह, उसका कंसेप्ट बर्नौली's इक्वेशन है. जस्ट बिफोर लिफ्टिंग ऑफ व्हाट विल हैपन? एरोप्लेन रन ऑन इट्स रनवे वेरी हाई. जितना ज़्यादा स्पीड में जा पाएगा उतना इजीली ऊपर जा पाएगा. कैसे? कैसे? व्हेन एरोप्लेन रन ऑन इट्स रनवे व्हाट विल हैपन? एयर इज ब्लोन over the wing and below the wing, and time taken by the air is same. Keep in mind, time taken by air to cover above the wing is equal to below the wing. दोनों सेम है. Time taken by the wing will be time taken by the wind above the wing and below the wing is same, but the distance traveled by the wind above the wing is more. Distance is more. यहीं पे देखो distance ज़्यादा है कि नहीं? अरे यहीं पे डिस्टेंस ज़्यादा है कि नहीं? यहीं पे डिस्टेंस कम है. एज द डिस्टेंस इज मोर, द वेलोसिटी ऑफ द विंड अबव द विंग इज वेरी लार्ज देन बिलो द विंग. सभी को सुनाई दे रहा है? ये सो गए? हेलो, सभी को सुनाई दे रहा है? Yes, sir. तो विंड अबव द विंग, द वेलोसिटी ऑफ द विंड अबव द विंग is very high than below the wing. Why? Because the distance traveled by the wind above the wing is more than below it. As the distance is more तो obviously speed what ज़्यादा होगा, क्योंकि टाइम दोनों में सेम है. टाइम दोनों में सेम है, इसलिए स्पीड अबव द विंग इज मोर देन बिलो द विंग. इसलिए जितना रैपिडली जाएगा ऊपर भी उतना स्पीड और ज़्यादा बढ़ेगा. एज स्पीड इज मोर, द प्रेशर अबव द विंग इज लेस देन प्रेशर बिलो द विंग. अभी ऊपर प्रेशर लेस हो गया तो व्हाट विल हैपन? नाउ इजी टू लिफ्ट. अरे अभी एरोप्लेन आराम से लिफ्ट करेगा क्योंकि ऊपर तो प्रेशर कम हो गया ना. बाढ़ भी वैसे ही जाते हैं. जब बड़ा बड़ा क्रेन सब या फिर बड़ा बड़ा पेलिकन जब नीचे आते हैं, उड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. तो बड़ा बड़ा विंग है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आगे जो लीडर देखोगे उसका विंग में थोड़ा थोड़ा एयर ऐसे देगा, वाह, पीछे धकेलेगा. तो उसके बाद 2 पेलिकन्स होते हैं या 3 होते हैं, समझ में? ये एयर को अच्छी तरह यूज करेंगे वो, फिर वो पीछे धकेलेंगे. उसके बाद ये 4 या 5 ऐसे भी शेप में उड़ते हैं. ये कभी देखा है? बड़ा बड़ा पेलिकन सब भी शेप में उड़ते हैं. क्यों? उनको पता है फिजिक्स क्या है, बर्नौली's इक्वेशन कैसे यूज करना है. समझ में? तो ये जो लीडर आगे जा रहा है उसको सबसे तकलीफ होता है. क्यों? उसके कोई आगे हेल्प करने के लिए नहीं है,
खुद क्रिएट करता है लो प्रेशर अबव इट्स विंग। बाकी इजी रहता है इसको, फिर थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे पीछे जाओगे पीछे वाला आराम से व्हाट मजे ले रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए पूरा तो एयर ऑटोमेटिक आता है उनको उनका विंग के ऊपर। अंडरस्टैंड दिस? इसलिए दे आर यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। जब भी बर्ड उड़ते हैं ऊपर तो बर्नौलीज इक्वेशन को अच्छी तरह यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? डायरेक्ट उड़ते नहीं है, पहले वो भागते हैं थोड़ा, अरे पंख फैला के भागते हैं थोड़ा, भागने के बाद ऑटोमेटिक उड़ते हैं। समझ में है कि नहीं? अंडरस्टैंड दिस? तो दिस इज द लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन और डायनामिक लिफ्ट। राइट डाउन 7th वन। और एरोफॉयल भी उसको बोला जाता है। अरे हम हाथ में एक एरोप्लेन बना के छोड़ते हैं, अरे कभी कागज में बनाया? हेलो, वो एरोफॉयल है, रॉकेट की तरह शेप देते हैं, उसके बाद उसको उड़ाते हैं, उड़ता है वो। दैट इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज इक्वेशन। अंडरस्टैंड दिस? लिखो, राइट डाउन। Before lifting of aeroplane, before lifting of aeroplane, it run on its runway. It run on its runway. It run on its runway so that the pressure above the wing, so that the pressure above the wing is less than below it. Below it. Above the wing is more than the pressure, sorry, the pressure above the wing is less than below it. Below it. Hence, easy to lift. Hence, easy to lift. Hence, easy to lift. Understand this? Easy to lift. समझ में? This is lifting of aeroplane or aerofoil. Clear? Next, number 8, venturimeter works according to Bernoulli's equation. लिखो, venturimeter. What do you mean by venturimeter? लिखो, venturimeter. Write down. This is a device used to determine. This is a device which is used to determine the rate of flow of liquid. The rate of flow of liquid. The rate of flow of liquid in a tube. The rate of flow of liquid in a tube. The rate of flow of liquid in a tube. In a tube. This is what? Venturimeter. इसमें से क्या निकालोगे? The rate of flow of liquid निकालोगे. Liquid is flowing inside the tube like this. Like this, liquid is flowing in a streamlined manner. I have to find out the rate of flow of liquid in this tube. The height will be same here from the ground. From the ground, height is same because we have to measure the height from center to center. I have to measure the height from center to center. The height will be same. Clear? Height of the liquid will be, height of the tube will be same. तो इसमें क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड निकालेंगे। देखो, इसमें वेलोसिटी v1 होगा, इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 होगा, इसमें वेलोसिटी v2 होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इज a2, here also a2, and v2 is the velocity of the liquid. Understand this? Now 2 points I am taking. This is what point A and this is what point B. Now tell me where the pressure will be more. Arey, where the pressure will be more? Can you tell me? Arey, where the pressure is more? A में या B में? Where the pressure of the liquid will be more? At A or B? Yes? Arey, where the pressure will be more? At A or B? Liquid pressure. B में ज़्यादा होगा, क्यों? अरे B में ज़्यादा क्यों होगा? आशीष, अरे B में ज़्यादा क्यों होगा? कोई बोल पाएगा? प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होगा, A या B? हेलो सर ए में ज्यादा होगा क्योंकि क्यों बोलो?
सर क्योंकि उधर वेलोसिटी कम है और बी में ज्यादा है। यस, ए में ज्यादा होगा। क्यों? बिकॉज इसमें वेलोसिटी कम है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, प्रेशर एट ए इज मोर देन प्रेशर एट बी। व्हाई? वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट ए इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट बी। बर्नौलीज इक्वेशन बोल रहा है जहां पे वेलोसिटी ज्यादा है वहां पे प्रेशर कम है, तो यहीं पे कम है प्रेशर, यहीं पे ज्यादा आएगा। देयरफॉर लिक्विड विल राइज मोर इन दिस कैपिलरी ट्यूब। इसमें लिक्विड ज्यादा हाइट तक राइज करेगा। देखो यहीं पे लिक्विड ज्यादा हाइट तक राइज करेगा, यहीं पे कम हाइट तक राइज करेगा, कम हाइट तक राइज करेगा। बाय नोइंग द व्हाट डिफरेंस इन हाइट, by knowing the difference in height, by knowing the difference of height h, I can determine the rate of flow of liquid. अरे हाइट किस में ज्यादा होगा? ए में ज्यादा होगा, एंड बी में कम होगा। क्यों? बी में प्रेशर ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, इसलिए प्रेशर कम है। ए में वेलोसिटी कम है, इसलिए प्रेशर ज्यादा है। therefore the liquid rises more height at a than b. By knowing this height h, by knowing this height h, difference in height h, we can determine the rate of flow of liquid through this tube. समझ में आ रहा है? किसको कुछ क्वेश्चन पूछना है बोलो? Any questions? No. Diagram draw करो. Write down in what? In venturimeter, I have to find out the rate of flow of liquid. Rate of flow of liquid is what? Volume by time. अरे rate of liquid मतलब क्या है? Volume by time. Volume is area into length by time. Length by time is velocity. Whenever you are multiplying area and velocity, that is the rate of flow of liquid. एक नोट में लिख लो तो बेटर होगा, नोट करके लिखो, नोट करो उसके बाद डिराइव करेंगे इसका फॉर्मूला। नोट लिखो, the rate of flow of liquid is equal, write down, rate of flow of liquid, rate of flow of liquid, q, q is equal what? Volume by time, volume by time, volume is what? Area into length by time, length by time is what? Length by time is velocity. So area into velocity always gives about what? Rate of flow of liquid, area into velocity, एरिया इंटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई करो तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मिलेगा ऑलवेज। एरिया इंटू वेलोसिटी गिव्स अबाउट रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अंडरस्टैंड दिस? तो नाउ राइट डाउन, देखो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, डेरिवेशन उसका वेंसुरीमीटर का डेरिवेशन देखेंगे। व्हाट इज दैट? डेरिवेशन ऑफ वेंचुरीमीटर, राइट डाउन, write down, according to Bernoulli's equation, total energy at A is equal to total energy at B. According to Bernoulli's equation, write down, according to Bernoulli's equation, total energy at A is equal to total energy at B. Total energy at A is equal to total energy at B. Now put the values. GH हाइट मेरा h है, A में हाइट कितना है? h है, GH प्लस हाफ V स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस PA बाई रो, प्रेशर एट A इज और PA बाई रो इज इक्वल GH प्लस हाफ V2 स्क्वायर प्लस प्रेशर एट B is or PB by rho. GH getting cancels out. Now which pressure is more? PA is more. So PA by rho minus PB by rho is equal half V2 square minus half V1 square. PA minus PB is a rho GH. Rho GH because height h is the difference in height due to the pressure difference. अरे ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस h इज द हाइट, तो PA माइनस PB, PA माइनस PB बाय रो इज इक्वल हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर. Now PA minus PB is your rho GH. Rho is the density of liquid. Pressure difference is what? Rho GH. H is the difference in height. यहाँ पे h is the difference in height है, वाह rho GH. So I can put here, this is what rho GH by rho is equal half V2 square minus half V1 square. Is that clear? Rho getting cancels out. Rho getting cancels out. लिखा? अरे लिखा ना?
तो नाउ व्हाट विल हैपन, देखो this is what gh is equal half, take it out, v2 square minus b1 square. This is what equation 1. Now I have to find out the rate of flow of liquid there is how much. Write down. Let, लिख दिया यहीं तक. Let q is the rate of flow of liquid through the tube. Let q is the rate of flow of liquid through the tube, then q is equal a1 v1, that is equal to a2 v2. Because it is an ideal liquid, the rate of flow of liquid at a is equal rate of flow of liquid at b. a में जितना जाएगा b में भी उतना लिक्विड जाएगा. तो मेरा v1 is equal q by a1 and v2 is equal and v2 is equal कितना q by a2. v2 is equal q by a2 डालो इक्वेशन 1 में. Now equation 1 can be written as what? Thus equation 1 can be written as what? I can write as equation 1 gh is equal half v2 square means q square by a1 square v2 square q square by a2 square minus q square by a1 square. Now find out q square. Q is how much? लिखो. Now find out what is there. What? Q. Find out how much you're getting q. This is what 2gh is equal q square, take it out, 1 by a2 square minus 1 by a1 square. So 2gh is equal q square, that is what? a1 square minus a2 square. This is a1 square minus a2 square. Now what is q square? You're going to get q square as what? Q square is equal 2gh a1 square a2 square by a1 square minus a2 square. तो q कितना मिलेगा? Finally that q will be how much? Q will be root over of 2gh into a1 square a2 square by a1 square minus a2 square. लिख दिया. एंड यहीं पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कितना होगा? देखो यहीं पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड Q विल बी, देखो यहीं पे लिखा मैंने a1 a2 रूट ओवर ऑफ 2gh by a1 square minus a2 square. This is what the rate of flow of liquid in a tube. You should know h is how much. अगर h पता चला तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो दिया जाएगा तुमको, तो इसमें कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इजीली यू कैन कैलकुलेट. दिस इज व्हाट वेंचुरी मीटर.